Welcome students. Welcome to class 5th English. Let's begin with the third and last part of our presentation. Wherever you are unable to understand the content, you can pause the video and listen again. You can write the content in any notebook. Last class subject notebook preferably. Put your queries in your respective class groups. Your teachers will help you definitely. Carefully listen to the instructions and follow them religiously. What we learnt in part 2 of my presentation, just a brief recapitulation. We started with poem recitation. We discussed about the character sketch of an ice cream man. I tried to explain the poem in simple words. We tried to find out the meaning of new words from dictionary. We also underline the action and describing words in the same. We tried to find out the rhyming words. We explore different facts about ice cream. We did data collection and plotted a graph. And we also tried to make how to make an ice cream. After listening and understanding the poem carefully, definitely we are able to answer the textbook questions. Let's begin with question number 1. In which season is ice cream popular? Yes, of course, we know the answer. Answer: ice cream is popular in summer season. Question number 2. Who feels joyful on seeing the ice cream man? Very easy, kids. Answer: children feels joyful on seeing the ice cream man. Question number 3. Name the different flavors of ice cream the ice cream man has in his cart. We already discussed that. Answer: ice cream man has different flavors in his cart like vanilla, chocolate, strawberry. What are the two things that the ice cream man is selling? This also we know that ice cream man is selling different flavors of ice cream and frosty fizz drinks. Question number 5. What is the ice cream cart compared to in the poem? Remember students, that was the beautiful part of that poem. Answer: the ice cream cart is compared to a flower bed of roses and sweet peas. Now we will discuss few more questions other than textbook to see whether we listen carefully or not. Write answers yourself in your notebook. Question 1. Who is the poet of the poem? Yes, children, tell me. Yes, Rachel Field is the poet of the poem. Question number 2. Why children are compared to honeybees? Honeybees buzz around flowers. Similarly, children buzz around the ice cream cart. Question number 3. Write one word for. Listen carefully and write one word from the poem which means the same. First, shine brightly as flame. Second, move noisily on wheels. Third, group of similar things. Fourth, a small hill pile of something. Number 5, who sells ice cream? And number 6, insect buzz around flowers. Now next is reading comprehension. Pause the video and read the passage carefully and answer the following questions. The passage is about whale, one of the most friendliest creature in the sea.
their own society. Question number 3. How do they communicate with each other? Number 4. Find one word that means the same. First, to be known as. Second, to die by being unable to breathe underwater. Question number 5. Find the opposite of the words. Number 1, strongest. Second, inferior. I am giving you simple English expression that you can practice at home. Try to communicate with your brother, sister or elders by using these simple expression. For example, Bhaiya, can you help me in doing my homework? Now, Bhaiya will ask you, what can I do for you? Or, how can I help you? You can ask him, Bhaiya, could you spell this word for me? You can request your mother, Ma, please turn off the light. You can simply ask your friend, Amit, where do you come from? You can humbly ask your Papa, Papa, open the window please. This way, start practicing and speaking with these simple sentences to improve the communication skills. When we are doing our written assignment in notebook, please make sure write words with correct letter formation. Our written assignments are spellings of new words followed by word meaning. Write the poem in cursive handwriting. Underline action and describing words using different colors. Action words blue pencil color, describing words yellow pencil color. We'll write rhyming words. Make new sentences using those rhyming words. You can draw a picture of your favorite ice cream and make a pamphlet to advertise your ice cream. In simple words, advertise your ice cream by giving it a new name, giving it a catchy line. You can write its ingredients, price, company name. You can also draw a barcode for it, manufacturing and expiry date. You will make lemonade and write its recipe in notebook, followed by textbook question answers, and based on reading comprehension, write answers in notebook. हिंदी में बताना चाहूँगी कि आपको नोटबुक में क्या काम करना है। सबसे पहले आप नए शब्दों की स्पेलिंग को कॉपी में लिखेंगे, जैसा कि आप पहले भी करते आए हैं। नेक्स्ट, आपको उसका वर्ड मीनिंग लिखना है। पोएम को कर्सिव हैंडराइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखना है। इसके बाद एक्शन वर्ड्स जो उस पोएम में आए हैं, आपको उसे नीले कलर से सर्कल करना है और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को आपको पीले कलर से सर्कल करना है। इसके बाद आप राइमिंग वर्ड्स लिखेंगे अपनी नोटबुक में। इसके बाद आप सेंटेंसेस भी बना सकते हैं उन्हीं राइमिंग वर्ड्स के साथ। आपको अपनी फेवरेट आइसक्रीम की पिक्चर बनानी है और एक एडवर्टीज़मेंट तैयार करनी है, जिसमें आप अपनी उस एडवर्टीज़मेंट में आप अपनी आइसक्रीम का एक बढ़िया सा नाम रखेंगे और उसको एक कैची लाइन देंगे। कहने का मतलब है जैसे कि आप कह सकते हैं कि खाओगे मेरी आइसक्रीम हो जाओगे ठंडे, कुछ इस तरह की कैची लाइन दीजिए। उसके इंग्रेडिएंट्स आप लिख सकते हैं कि आपने उसके अंदर कौन कौन सी सामग्री यूज़ करी है उसको बनाने के लिए। आप उसे एक प्राइस भी देंगे, कीमत उसकी, कंपनी का नाम देंगे, एक बारकोड बनाएंगे जो आप देखते ही हैं कि मशीन जिसको रीड करती है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट के साथ आप अपनी एडवर्टीज़मेंट को तैयार करेंगे। नींबू का रस, या आप जिसे कहते हैं कि नींबू पानी बनाने के लिए जो हम चीज़ें इस्तेमाल करेंगे उसकी रेसिपी आपकी क्या रहेगी, आप उसे अपनी नोटबुक में लिखेंगे। साथ ही टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर जो हमने डिस्कस किए हैं और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, उसके आंसर भी आप अपनी नोटबुक में ही लिखेंगे। अभी आप एक पिक्चर देख पा रहे हैं।
आपको करना ये है कि आपको इस पिक्चर को देखने के बाद में इस पिक्चर में आपको क्या समझ में आ रहा है इसको बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस में आप बताएंगे। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ आप इसको जोड़ सकते हैं, आपका अनुभव आप बता सकते हैं, अपनी कहानी को एक नाम दीजिए, या जो भी आप 5 सेंटेंसेस लिख रहे हैं तो अपनी स्टोरी को एक टाइटल दीजिए और उसका एक एंड भी तैयार कीजिए। ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है कि हम किस तरह से एक पिक्चर को देखने के बाद में अपने थॉट्स को हम कैसे इस पेपर पर लिख सकते हैं। During this break time, you can learn how to pack your bag and how to help your parents in daily chores, and you should also learn to share and care with others. I am sending you a link. Tap on that link, go to edit link, and it will open a new window where you can read the novel Robinson Crusoe. This novel was written by Daniel Defoe and published in 1791. That explains the life, a strange and surprising adventures of Robinson Crusoe. इसी के साथ मैंने एक लिंक और भेजा है आपको, बुक्स ऑनलाइन। अगर आप इस पर भी टैप करते हैं, आप एडिट लिंक पर जाएंगे, एक नई विंडो खुलेगी, वहाँ से आप डिफरेंट बुक्स में से कोई भी जो आपको पसंद है वो बुक आप चूज़ करके उसको पढ़ सकते हैं। और भी कुछ यूज़फुल लिंक्स हैं जो मैं आपको भेज रही हूँ। सेम तरीके से आप उस पर टैप करेंगे, गो टू एडिट लिंक, एक नया विंडो खुलेगा और उसमें आप उस चीज़ को एक्सप्लोर कर पाएंगे। इसी में कुछ NCERT द्वारा दिए गए कुछ वीडियोज़, ऑडियोज़ भी हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। After going through all the 3 sessions, now I am sure, students, we are able to recite the poem with correct pronunciation, rhyme and rhythm. Now we can make simple sentences with the given words. Now we can tell the gist of the poem to others. And definitely we can make an ice cream at home and learn to help elders and others in daily chores and how to communicate with the peer group. Thank you for listening me, and don't forget to post your queries to class group. Stay home, stay safe.